discuss today group 18 elements. What are the group 18 elements? Helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. These are the group 18 elements. Radon is a radioactive element. All these elements except radon found in the atmosphere. Radon Rn is obtained from radioactive element radium, जिसका सिंबल है Ra. So when radium is undergoing radioactive decay, मतलब radioactive reaction, radium जिसका atomic number है, atomic number of radium is 88 and इनका atomic mass 226. Radium is converted into radon का atomic number 86 and mass number 222. So radium is converted into radon by the emission of alpha particle. So radium is converted into radon by the emission of alpha particle. So radon किससे मिलता है? Another radioactive element radium से मिलता है. But the rest of the other group 18 elements are found in the atmosphere. So all the group 18 elements are chemically unreactive. Why they have chemically unreactive? क्यों उन लोग chemically unreactive है? Because their valence cell, मतलब outermost cell, completely filled. What is the valence cell configuration for group 18 element? NS2 NP6. Except helium, सभी group 18 element का valence cell में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 electrons है. So due to their completely filled valence cell configuration, therefore they react with few number of elements only under certain conditions. So they are also known as noble gases. So all the group 18 elements are chemically unreactive. Why they have chemically unreactive? Because they don't have any tendency to loss of electron or they don't have any tendency to gain of electron, क्योंकि उन लोगों का वैलेंस सेल completely filled है. उन लोगों का ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि एलिमेंट लोग केमिकल कॉम्बिनेशन में क्यों पार्टिसिपेट करता है?
आउटरमोस्ट सेल में उन लोगों का ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ग्रुप 18 एलिमेंट का ऑलरेडी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, सो they don't have any tendency to gain or lose electron, so they are chemically unreactive. But under certain conditions, certain experimental conditions, at certain temperature and pressure, group 18 elements are also react with few numbers of elements to form different compounds, जिनका बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. So group 18 elements in certain conditions of temperature and pressure can react with few numbers of elements. Therefore group 18 elements are also known as noble gases. group 18 element को क्या बोला जाता है? noble gases बोला जाता है. Now we are going to discuss about the electronic configuration for the group 18 element. So helium is the first element of group 18 जिनका atomic number 2 1s2. तो helium के लिए भी s orbital completely filled है. Next element neon जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शॉर्टली लिखने से हो जाता है 2s2 2p6. And another one argon 3s2 3p6. krypton के लिए स्टेबल एलिमेंट आर्गन लिखना पड़ेगा 3d10 4s2 4p6. एंड xenon जिनका एटॉमिक नंबर 54, इनके लिए स्टेबल एलिमेंट क्रिप्टोन आएगा देन 5d10 6s2 6p6. एंड लास्ट एलिमेंट रेडॉन. रेडॉन के लिए स्टेबल एलिमेंट लिखना पड़ेगा xenon 4f14 5d10 5d10 4f14 5d10. Sorry, this is 4d, this is 4d, then it is 5s, this is 5p, then this is 4f 5d10 6s2 6p6. सो सभी ग्रुप 18 एलिमेंट्स का वैलेंस सेल कंप्लीटली फील्ड, मतलब वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन से. सो एक्सेप्ट हीलियम, व्हाट इज द वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन? Valence cell configuration for the group 18 element is ns2 and p6. Then they have how many valence electron? 8 valence electron. So in group 18 element p orbital क्या हो गया? Completely filled हुआ. So these are the electronic configuration of the group 18 elements. Another one general property related to the group 18 element is ionization enthalpy. Ionization enthalpy. Ionization enthalpy means energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. So ionization enthalpy, it is very high for group 18 elements. Why ionization enthalpy is very high for group 18 elements? Because they don't have any tendency to lose electrons. They don't have any tendency to lose electrons because they have stable electronic configuration, so they don't have any tendency to lose electrons. So therefore they have very high ionization enthalpy. तो periodic table में
ग्रुप 18 एलिमेंट्स लोगों का ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होता है. सो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी. Next one general property for group 18 element is electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. So electron gain enthalpy means energy release when an isolated gaseous atom gain an electron. So electron gain enthalpy is a negative quantity. Electron gain enthalpy is more negative for that elements which have greater tendency to gain electrons. Most negative electron gain enthalpy for group 17 elements because they have greater tendency to gain an electron. But for group 18 elements, they have positive electron gain enthalpy because they don't have any tendency to gain electrons. क्योंकि ग्रुप 18 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी भी नहीं है. सो ग्रुप 18 एलिमेंट्स they have positive electron gain enthalpy. Why? Because they don't have any tendency to gain electrons. So group 18 elements don't have any tendency to gain electrons. Therefore, they have positive electron gain enthalpy. So next one, physical properties. Physical properties of group 18 elements. In group 18 elements, all the noble gases मतलब group 18 elements, all the noble gases are monoatomic. They are found in monoatomic state. So all these elements are found in gaseous state and they are monoatomic gases. They are colorless, odorless and tasteless. Group 18 elements are tasteless, odorless and colorless. And they have very low melting point and boiling points. Q due to the presence of weak dispersion forces between their atoms. So group 18 elements, they have very low melting and boiling point. Why they have very low melting and boiling point? Due to the presence of weak dispersion forces between their atoms. Dispersion forces is a type of van der Waals forces of attraction. It is the weakest van der Waals forces of attraction. So group 18 elements are associated by the weakest van der Waals forces of attraction. So they have very low melting and boiling point. तो melting point and boiling point high होने के लिए molecule of that substance must be associated by the strongest intermolecular forces of attraction, like hydrogen bonding.
But group 18 elements are associated by the weakest intermolecular forces of attraction, which is dispersion, also called London forces. Therefore, they have very low melting and boiling points. So, इन लोगों का chemical properties, chemical properties मतलब chemical reactivity. Group 18 elements chemically less reactive. Why group 18 elements are chemically less reactive? Chemically inert, chemically less reactive. Why? Due to their completely filled valence shell configuration, NS2 NP6. Due to their completely filled valence shell configuration, they don't have any tendency to gain or lose electrons. So they are chemically inert or chemically less reactive. But under certain experimental conditions, under certain pressure and temperature, group 18 elements react with very few numbers of elements. Therefore, group 18 elements are also called noble gases. So, in March 1962, Neil Bartlett first prepared a compound of group 18 element, which is XePtF6. This is the formula of group 18 element. It was prepared by the reaction of platinum hexafluoride with xenon. प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड को xenon का साथ रिएक्ट करके इनको प्रिपेयर किया by Neil Bartlett in the year of 1962. So it is the first compound of group 18 element. So after the synthesis of this compound of group 18 elements, few other compounds of group 18 elements have been synthesized. So group 18 elements, group 18 elements can combine with the most electronegative element, fluorine and oxygen. So now we are going to discuss few compounds of group 18 element. First of all, we are going to discuss about the xenon, fluorine compounds. xenon फ्लोरीन का साथ कंबाइन होके तीन कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, xenon डाइफ्लोराइड, xenon टेट्राफ्लोराइड and xenon hexafluoride. Xenon difluoride, this is difluoride, this is tetrafluoride, and this is hexafluoride.
fluoride. These are called binary compounds. Binary compound matlab compound of two elements. These are binary compound of xenon and fluorine. So xenon combine with fluorine to form three different types of compound: difluoride, tetrafluoride, and hexafluoride. So xenon, it is found in solid state. Xenon combine with fluorine. Xenon combine with fluorine at a temperature of 673 Kelvin and at a pressure of 1 bar produces xenon difluoride. So it is gas. Xenon combine with fluorine at a temperature of 873 Kelvin and at a pressure of 7 bar produces xenon tetrafluoride. लेकिन xenon and fluorine react करके xenon tetrafluoride produce होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ये दोनों का रेशियो 1:5 रेशियो में होना पड़ेगा. और xenon difluoride फॉर्म होने के लिए xenon क्या होना पड़ेगा? एक्सेस होना पड़ेगा फ्लोरीन से. These are called experimental condition. These are the conditions. देखो temperature and pressure also different. Similarly, xenon reacts with fluorine at a temperature of 573 Kelvin and at a pressure of 60 to 70 bar produces xenon hexafluoride. और यहाँ xenon and fluorine का रेशियो होगा 1:20 रेशियो में कंबाइन होता है, 1:20. सो देखो रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट डिफरेंट है. व्हाई? एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस आर डिफरेंट. So at the different experimental conditions, xenon combines with fluorine produces three different fluoride compounds of xenon. Now we are going to discuss about the properties of xenon fluorine compounds. So xenon fluorine compounds are colorless, crystalline, solid. Xenon fluorine compounds are colorless, crystalline, solid, and they are powerful fluorinating agent. Fluorinating agent means they can provide fluorine to another substance. So they are fluorinating agent. And one of the important property of group 18 element, they are readily, not the most easily, hydrolyzed by water. Readily hydrolyzed by water मतलब xenon fluorine compounds easily water का साथ react कर लेता है. For example, xenon difluoride hydrolyzed by water produces xenon gas, balance करने से 2, hydrogen fluoride gas, and produces oxygen gas. This is solid state, this is liquid. बैलेंस करने से हम लोग यहाँ 2 डालना पड़ेगा. तो xenon difluoride hydrolyzed by water produces xenon, hydrogen fluoride, and oxygen gas. One more property of, that means reaction of xenon fluoride compounds are, xenon fluoride compounds, suppose xenon difluoride, can combine with fluorine ion acceptor. ये क्या होगा? Fluorine
एटम एक्सेप्टर, फ्लोरीन एटम एक्सेप्टर, इससे ये फ्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब xenon fluorides can combine with fluorine atom acceptor as well as fluorine atom donor। सो ये जो फ्लोरीन एटम एक्सेप्ट कर लिया ये बन जाएगा PF6 एंड xenon डाइफ्लोराइड फ्लोरीन डोनेट करके ये बन गया कैटायन बन गया, मतलब एक सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ। सिमिलरली xenon fluorine compound, xenon suppose hexafluoride, reacts with fluoride ion donor, this is fluorine atom donor, fluorine atom donor। तो क्या करे ये इनको फ्लोरीन डोनेट करेगा, फ्लोरीन डोनेट करने से ये मेटल आयन पॉजिटिव आयन बन गया और ये फ्लोरीन एक्सेप्ट करके Fe(F6)(7) and it becomes negatively charged। तो ये भी सॉल्ट बना। या जो M है, M इज द मेटल, M मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो xenon फ्लोरीन कंपाउंड्स, xenon डाइफ्लोराइड, xenon टेट्राफ्लोराइड, xenon हेक्साफ्लोराइड रिएक्ट कर सकता है बोथ फ्लोरीन आयन एक्सेप्टर एंड फ्लोरीन एटम डोनर। फ्लोरीन एटम डोनर का साथ भी रिएक्ट कर सकता है, xenon डाइफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड एज वेल एज फ्लोरीन एटम एक्सेप्टर का साथ भी रिएक्ट करता है, लाइक दिस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द structure, about the structure of xenon fluorine compound। सपोज xenon डाइफ्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर इस तक। तो xenon का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, 8 से 2 शेयरिंग किया, सो बोन पेयर्स कितना हुआ 2। एंड xenon का पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल कितना रह गया 6, मतलब कितना पेयर्स हो गया 3 लोन पेयर्स। सो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होने से रेगुलर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल होना चाहिए, लेकिन रेगुलर ज्योमेट्री तो होगा नहीं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ज्योमेट्री डिस्टोर्टेड टू लीनियर। सो xenon होगा एट द सेंटर। ट्राइंगल का 3 पोजीशन में 3 लोन पेयर्स होगा, ट्राइंगल का 3 पोजीशन में 3 लोन पेयर्स, दीज आर द 3 लोन पेयर्स। और परपेंडिकुलर दोनों पोजीशन में बोन पेयर्स है। सो दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ xenon डाइफ्लोराइड, लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ xenon डाइफ्लोराइड। फिर xenon टेट्राफ्लोराइड, xenon टेट्राफ्लोराइड, तो xenon का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 8 है, 8 से 4 शेयरिंग कर लिया, बोन पेयर्स कितना हो गया 4। एंड xenon का पास और 4 इलेक्ट्रॉन्स है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, मतलब लोन पेयर्स कितना हो गया 2, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6। तो ज्योमेट्री क्या हुआ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ऑक्टाहेड्रल रेगुलर ज्योमेट्री होगा नहीं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टाहेड्रल में 2 पोजीशन लोन पेयर ऑक्यूपाई कर देने से ऑक्टाहेड्रल डिस्टोर्टेड टू स्क्वायर प्लेनार। सो स्क्वायर प्लेनार में डिस्टोर्टेड हो जाएगा। सो ये जो, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में क्या कितना पोजीशन होता है, टोटल 6 पोजीशन होता है अराउंड द सेंट्रल एटम। सो अभी दोनों परपेंडिकुलर पोजीशंस आर ऑक्यूपाइंग बाय द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड सेम प्लेन में जो 4 पोजीशंस है दे आर ऑक्यूपाइंग बाय द बोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोन पेयर ऑक्यूपाई कर लिया। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ज्योमेट्री, दिस इज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ xenon टेट्राफ्लोराइड। ऑक्टाहेड्रल से चेंज हो गए स्क्वायर प्लेनर बन गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट xenon हेक्साफ्लोराइड। सो xenon हेक्साफ्लोराइड में xenon का वैलेंस इलेक्ट्रॉन
8 है, 8 से 6 शेयरिंग कर लिया तो बोन पेयर्स कितना हो गया 6 एंड जेनॉन का पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 रह गया मतलब लोन पेयर्स कितना 1 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 7 तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 7 होने से रेगुलर ज्योमेट्री पेंटागोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए पेंटागोनल बाई पिरामिडल तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल का 1 पोजीशन अभी लोन पेयर ऑक्यूपाई कर लेगा सो पेंटागन टू रेगुलर ज्योमेट्री होगा नहीं इसका पेंटागोनल बाई पिरामिडल में 1 लोन पेयर आ जाने से ज्योमेट्री चेंजेस टू स्क्वायर बाई पिरामिडल हो जाता है तो ऐसा हुआ पेंटागन मतलब 5 पोजीशंस इन द सेम प्लेन 5 पोजीशन एंड 2 परपेंडिकुलर पोजीशंस होगा तो अराउंड द जेनन कितना पोजीशन हो गया टोटल 7 पोजीशन है 7 सो अभी सेम प्लेन में 1 पोजीशन लोन पेयर ऑक्यूपाई कर लेगा और बाकी पोजीशंस आर ऑक्यूपाइंग बाय द बोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बाकी कौन ऑक्यूपाई करेगा बोन पेयर सो परपेंडिकुलर पोजीशंस आल्सो ऑक्यूपाइंग बाय द बोन पेयर्स मतलब दिस तो इसको बोलेगा हम लोग स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलेगा स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री then now we are going to discuss about the xenon oxygen compounds क्योंकि xenon ऑक्सीजन का साथ भी कंबाइन हो सकता है तो xenon ट्राइऑक्साइड इज ए xenon oxygen compound तो xenon oxygen compound xenon trioxide can be prepared by the reaction of xenon hexafluoride हाइड्रोलाइज करने से by water produces xenon trioxide हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड ऑक्सीजन तो ये रिएक्शन को बैलेंस करने से हम लोग xenon का आगे में 4 लगाना पड़ेगा इसके आगे में 6 लगाना पड़ेगा इसके आगे में 12 लगाना पड़ेगा देन यहाँ आ जाएगा 2 यहाँ आ जाएगा 24 डालना पड़ेगा एंड यहाँ ऑक्सीजन का आगे में 3 लिखना पड़ेगा सो xenon hexafluoride reacts with water xenon hexafluoride hydrolyzed by water produces xenon trioxide similarly xenon tetrafluoride also hydrolyzed by water produces xenon trioxide and hydrogen fluoride like this and इनका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर सो xenon ट्राइऑक्साइड में xenon सेंट्रल एटॉम sp3 हाइब्रिडाइज होगा sp3 सेंट्रल एटॉम कौन सा हाइब्रिडाइज होगा इन xenon ट्राइऑक्साइड में xenon एटॉम इज sp3 तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने से टेट्राहेड्रल होना चाहिए ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल लेकिन स्ट्रक्चर नहीं तो ज्योमेट्री distorted into pyramidal due to the presence of one lone pair electron so this is xenon this is pyramidal geometry of the xenon trioxide then xenon oxy tetrafluoride and xenon dioxy difluoride इन लोगों को भी प्रिपेयर कर सकता है xenon hexafluoride वाटर का साथ रिएक्ट करने से xenon oxy tetrafluoride and hydrogen fluoride is produced
xenon hexafluoride reacts with water, produces xenon dioxy difluoride and HF. सो अभी इन दोनों का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है. सो एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी हम लोग निकाल सकता है. तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल के हम लोग ये दोनों का स्ट्रक्चर इजीली डिटरमाइन कर सकता है. हम क्लास 11 में एक फॉर्मूला दिया था पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन सा हाइब्रिडाइज है डिटरमाइन करने के लिए. ये फॉर्मूला था x इक्वल टू, दिस इज सपोज नोट, दिस इज नोट, x इक्वल टू SA प्लस हाफ G माइनस B प्लस माइनस E, ये फॉर्मूला. सो what is SA here? Suppose what is x? X is the number. ये फॉर्मूला यूज करके x निकालना पड़ेगा for the central atom for a molecule. So x में it may be 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, 7 like that. तो x इक्वल टू 2 निकालने से हाइब्रिडाइजेशन होगा सेंट्रल एटम का sp, 3 निकालने से sp2, 4 निकालने से sp3, 5 निकालने से sp3d, 6 निकालने से sp3d2 and 7 निकालने से sp3d3. Then what is SA? SA is number of surrounding atom around the central atom. Number of surrounding atom around the central atom, SA means. So Z represents the valence electrons of central atom, central atom का valence electron, and V means valency of surrounding atom का valency, and E represents the charge, E equal to 0 for neutral molecule, neutral space इसके लिए E equal to 0, E equal to positive for negative ion and E equal to negative for पॉजिटिव आयन. सपोज अभी ये हम लोगों का मॉलिक्यूल हो गया xenon डाइऑक्सी, xenon ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड, इसके लिए ऑक्सी ओ, इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है, मतलब सेंट्रल एटम कौन सा हाइब्रिडाइज है डिटरमाइन करना है. तो xenon इज द सेंट्रल एटम हियर, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर द सराउंडिंग एटम इन दिस मॉलिक्यूल. तो हम लोग xenon का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने के लिए x वैल्यू निकालो. सो हियर सराउंडिंग एटम कितना हो गया, 5 है, फ्लोरीन एटम 4, ऑक्सीजन एटम 1, मिलके 5 हुआ, सराउंडिंग एटम 5. ऐसे का जगह में 5 लगाना है क्योंकि ऐसे इज द नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम अराउंड द सेंट्रल एटम. xenon इज द सेंट्रल एटम हियर, प्लस हाफ, और G क्या रिप्रेजेंट करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम. हियर xenon इज द सेंट्रल एटम, xenon का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है क्योंकि इट इज अ ग्रुप 18 एलिमेंट. इसके बाद माइनस अभी तो सराउंडिंग एटम 2 हो गया, एक है ऑक्सीजन एंड एक है फ्लोरीन. सो दोनों का वैलेंसी डालना पड़ेगा. V क्या रिप्रेजेंट करता है, वैलेंसी ऑफ द सराउंडिंग एटम. सो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन एटम 1 है, प्लस दोनों का वैलेंसी प्लस करना पड़ेगा. फ्लोरीन का वैलेंसी 1 है. हाउ मेनी फ्लोरीन एटम इन दिस कंपाउंड, 4, और इट इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल. पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन होने से तो ऊपर में लिखा रहेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन. सो इट इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल. सो हम लोग E का जगह में क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा. सो इसको कैलकुलेशन करने से अभी हम लोग को क्या मिल जाएगा, दिस इज 8. सो 4 प्लस 2 6. सो 8 से 6 माइनस करने से ये क्या आ गया, 2 आ गया. 2 ये हो गया, 2 1 तो क्या आ गया, 6 कैलकुलेशन करने से. सो x इक्वल टू 6 निकालने से देन सेंट्रल एटम इज व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज, sp3d2 हाइब्रिडाइज. और जब एक मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम sp3d2 हाइब्रिडाइज
होता है देन मॉलिक्यूल का रेगुलर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होता है। तो अभी रेगुलर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा कि नहीं ये डिटरमाइन करने के लिए अराउंड द सेंट्रल एटम हम लोग लोन पेयर डिटरमाइन करना पड़ेगा। लोन पेयर एब्सेंट होने से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा, लेकिन लोन पेयर प्रेजेंट होने से ऑक्टाहेड्रल से डिस्टोर्शन होगा, चेंज होगा, दूसरा ज्योमेट्री हो जाएगा। सो नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकालने के लिए ये जो एक्स वैल्यू कितना निकला 6, एक्स वैल्यू से नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम को माइनस करना है। सो ये मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितना है 5 इक्वल टू हाउ मेनी 1, लोन पेयर 1 हुआ। तो ऑक्टाहेड्रल का 1 पोजीशन लोन पेयर ऑक्यूपाई करेगा अभी, मतलब ऑक्टाहेड्रल का 1 पोजीशन ऑक्यूपाई करने से बाय द लोन पेयर ज्योमेट्री चेंजेस टू स्क्वायर पिरामिडल, ज्योमेट्री चेंजेस टू स्क्वायर पिरामिडल। तो अराउंड द सेंट्रल एटम टोटल हाउ मेनी पोजीशंस 4 पोजीशंस, ठीक है, and 4 positions are occupying by the 4 fluorine atoms like this, 4 fluorine atoms, और 2 परपेंडिकुलर पोजीशन बाकी है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में अराउंड द सेंट्रल एटम 6 पोजीशन होता है। सो सपोज एक परपेंडिकुलर पोजीशन में ऑक्सीजन हो गया, बाकी अनदर पोजीशन में लोन पेयर आ गया। सो ये ज्योमेट्री इसको क्या बोलेगा हम लोग स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बोलेगा, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री हो गया। दिस इज द स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री ऑफ व्हिच कंपाउंड XeOF4 कंपाउंड, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। देखो ऑक्सीजन जेनॉन का साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा क्योंकि ऑक्सीजन इज अ डाइवैलेंट एलिमेंट, इसलिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा जेनॉन का साथ। सो अनदर कंपाउंड XeO2F2 इनके लिए, सो इसके लिए भी हम लोग x निकालना है स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए। यहाँ भी सराउंडिंग एटम कितना है 4 प्लस हाफ, G वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जेनॉन 8, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2 इंटू 2, 2 ऑक्सीजन है इंटू 2, प्लस फ्लोरीन का वैलेंसी 1 इंटू 2 प्लस माइनस 0 क्योंकि इट इज़ ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ई का जगह में 0 लगाना है। 4 प्लस हाफ देन ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 6, देन 8 माइनस 6 2, यहाँ भी 2 आ गया। सो दिस इज इक्वल टू कितना निकलेगा 5। तो x इक्वल टू 5 निकलने से सेंट्रल एटम sp3 डी हाइब्रिडाइज होगा, और सेंट्रल एटम sp3 डी हाइब्रिडाइज होने से ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सो अभी ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रेगुलर ज्योमेट्री होगा कि नहीं ये डिटरमाइन करने के लिए हम लोग लोन पेयर्स को देखना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ लोन पेयर्स 5 माइनस सराउंडिंग एटम 4 इक्वल टू 1, लोन पेयर 1। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का 1 पोजीशन लोन पेयर ऑक्यूपाई कर लेगा। तो जेनॉन इज द सेंट्रल एटम, अराउंड द सेंट्रल एटम टोटल 5 पोजीशन होगा, आउट ऑफ 5 पोजीशन 1 पोजीशन लोन पेयर ऑक्यूपाई कर लेगा। परपेंडिकुलर दोनों पोजीशन बोन पेयर ऑक्यूपाई करेगा, सेम प्लेन में 2 पोजीशन भी बोन पेयर ऑक्यूपाई कर लेगा, ऑक्सीजन ऑक्यूपाई करेगा। सो ऑक्सीजन जेनॉन का साथ डबल बोन फॉर्म करेगा, और ये ज्योमेट्री है सीसो ज्योमेट्री क्योंकि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 1 लोन पेयर होने से ज्योमेट्री चेंजेस टू सीसो। सो this is the so we finished P block chapter today. So next video we will start D and F block of element.